Hello, I am Sayan Sannyasi. I am from West Bengal. I have recently cleared IBPS CLERK exam. So I am sharing my story of success with all of you. So here it is. So before starting the preparation, you have to know about the whole syllabus. You have to study it very carefully. At first, ये जो प्री एग्जाम में सिर्फ तीन तीन सब्जेक्ट से क्वेश्चन आता है, रीजनिंग, मैथ एंड इंग्लिश। एंड मेंस में चार सब्जेक्ट आता है, ये रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश, एंड उसके साथ जीए का भी क्वेश्चन आता है। तो पहले हम ये तीनों सब्जेक्ट का ही प्रिपरेशन करते हैं अच्छे से, तो प्री एग्जाम क्लियर करने के लिए। तो पहले हम वन बाय वन स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ कैसे कौन कौन सब्जेक्ट को प्रिपेयर करना है। एट फर्स्ट यू हैव टू नोट ऑल द टॉपिक इन योर कॉपी वेरी केयरफुली, जैसे कोई भी टॉपिक छूट ना जाए। उसके बाद आपको सर्च करना है यूट्यूब पे ये सब टॉपिक का नाम लिख लिख के, और बहुत सारा वीडियो मिल जाएगा यूट्यूब में, फ्री कंटेंट अवेलेबल है यूट्यूब में बहुत सारा। तो इसको देख लीजिएगा। आई थिंक एटलीस्ट 3-4 वीडियो देख के सब कुछ क्लियर हो जाता है। तो ऐसे तो करते करते टोटल आई थिंक तो रीजनिंग में 12 या फिर 13 टॉपिक आता है। तो जैसे सिलॉक्स, इनइक्वालिटी, कोडिंग, डिकोडिंग, पजल्स, उसके साथ आता है न्यूमेरिकल सीरीज, ये सब कुछ, ब्लड रिलेशन। तो ये सब कवर करने में आई थिंक एक दिन एक टॉपिक ऐसे कर करके तो कवर करने में शायद 20 डेज या फिर 15 डेज लग जाएगा। तो once all the topic got finished, you have to go for miscellaneous practice. तो miscellaneous practice के लिए I will suggest dhruvasir from the Virtuous channel. A lot of contents are available in his channel, and he takes classes on a daily basis. He takes classes regularly, so you have to attend all these lectures on live and practice from there. But that is not enough for your practice, because you have to practice more and more. So for that you can go for guidely PDF course, and you have to attend a daily sectional mock of reasoning. तो मॉक देने से ही स्पीड इंक्रीज होता है, एंड आपको टाइम मैनेजमेंट के बारे में पता लगता है कि कैसे टाइम को मैनेज करना है। तो इनिशियली आप जब मॉक दोगे तो उस टाइम हो सकता है आपका मार्क्स उतना ज़्यादा नहीं आ रहा है, 35 में तो शायद 20, 15, 18 ऐसा कुछ मार्क्स आ रहा है। बट टाइम के साथ साथ वो मार्क्स इंक्रीज होते जाएगा, और एक दिन आप देखोगे कि आपका स्कोर 32 आउट ऑफ 35, 33 आउट ऑफ 35 ऐसा आ रहा है। तो उस दिन तो आप सोचोगे कि आपका जो प्रिपरेशन का लेवल एकदम ठीक ठाक हो गया। The same strategy is applicable for mathematics too. You have to clear the concept of each and every chapter very carefully, and I will suggest Groom 2.2 video of the channel Virtuous for that. After completing all the chapter, you should go for practice session. सिंह सर डेली क्लास लेते हैं यूट्यूब पे, आपको ये सब क्लास डेली अटेंड करना है, एंड अटेंड एटलीस्ट one mock daily to make your practice better and increase your speed. For English, I think you should follow the crash courses of Vishal sir and Norden sir on YouTube, and you have to read English editorial daily to improve your English skill, to improve your reading. And but the best thing you should do that attempt a mock test and analyze all the question after submitting this, and कुछ नया वर्ड मिले तो उसको याद रखने का कोशिश करना चाहिए, एंड आपको डेली एटलीस्ट एक आरसी सॉल्व करना है। बहुत सारे लोग एक गलती करता है दैट दे स्टार्ट प्रिपेयरिंग जीए आफ्टर द रिजल्ट ऑफ प्री, बट आई थिंक दैट इज द बिगेस्ट मिस्टेक दे कैन डू। यू हैव टू प्रिपेयर जीए फ्रॉम द टाइम ऑफ प्री एग्जाम। आपको प्री का रिजल्ट आने से पहले ही तो जीए प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देना चाहिए, एंड यू हैव टू प्रिपेयर द करंट अफेयर्स ऑफ लास्ट 5 to 6 months वेरी केयरफुली। फॉर जीए आई विल सजेस्ट द PDF of AffairsCloud and Study IQ.
आपको एग्जाम से पहले, मेंस एग्जाम से पहले एटलीस्ट 3 टाइम्स उसको जो रिवाइज करना पड़ेगा। एंड बहुत सारा टेलीग्राम ग्रुप है तो जिसमें फ्री क्विजेस होता है, आपको डेली डेली वो क्विज देना पड़ेगा। आई थिंक यू शुड गो फॉर अफेयर्स क्लाउड वीकली पीडीएफ, जो बहुत ही बेनिफिशियल रहता है। आप अफेयर्स क्लाउड का एक सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, वो बहुत ही ज़्यादा सस्ता है। So that is how you can clear the exam. I had followed the same strategy. For mock test, I will suggest you the mock test from Practice Mock and Adda. One thing I understand during my days of preparation, that you have to follow a fixed routine on a daily basis and always keep your hope alive. Read everything with equal importance and prepare GA from the time of pre-exam. Thank you so much.